Hello students, good morning to all. First Brahmanad. Om Shanti Shanti Shanti. In last class we discussed some problems of exercise from books and also some application of allied angles and trigonometry identities, also basing on some problems basing on logarithm also. Okay, today we are going to discuss compound angle. Okay, so what is the compound angle? The sum or difference of two or more angle is known as compound angle. Sum or difference of two or more angles are known as compound angle. Suppose capital A and capital B are two angles, then A plus B and A minus B are known as compound angles. Also, if A, B, C are three angles, then A plus B plus C, A plus B minus C, A minus B plus C, A minus B minus C, these are known as compound angles. Okay? Yes, compound angles. Compound angles. Okay? Sum or difference of two or more angles is known as compound angle. Okay, let capital A comma capital B are two angles, then A plus B comma A minus B are known as compound angles. Similarly, A comma B and C are any three angles, then A plus B plus C, A plus B minus C comma A minus B plus C and A minus B minus C are known as compound angles. Okay, some formulae of compound angles. So one, sine of A plus B. By head the formula. Okay, sine of A plus B. Sine of A plus B. So is equal to sine A into cos B plus cos A into sine B. Sine cos cos sine. 2 sine of A minus B is equal to sine A into cos B minus cos A into sine B. Plus, this is minus, plus minus 3 cos of A plus B
is equal to cos A into cos B minus sin A into sin B. Plus means मतलब cos of A plus B, तो cos लिखना प्लस लिखना सेठी माइनस 4 cos of A minus B, cos of A minus B is equal to cos A into cos B plus sin A into sin B. Next 5 tan of A plus B, tan of A plus B is equal to tan A plus tan B divided by 1 minus tan A into tan B. Okay, next 6 tan of A minus B is equal to tan A minus tan B divided by 1 plus tan A into tan B. Minus means this also minus, तो R opposite is plus, ये plus this is plus, R opposite कौन आसला minus. 7 cot of A plus B is equal to cot A into cot B minus 1 divided by cot B plus cot A. 8 cot of A minus B is equal to cot A into cot B plus 1 divided by cot B minus cot A. These are the some formula. 9 sin of A plus B plus C is equal to sin A into cos B into cos C plus cos A into sin B into cos C plus sin C sin next cos A plus into sin B into cos C plus cos A cos B sin C minus sin A sin B sin C. Sin of A plus B plus C, तो sin A into cos B into cos सिंगल साइन डबल cos, सिंगल साइन डबल cos, सिंगल साइन डबल cos, लास्ट को माइनस sin A sin B sin C. ओके, नेक्स्ट 10 cos of A plus B plus C is equal to cos A into cos B into cos C minus cos A into sin B into sin C minus sin A into cos B into sin C minus sin A into sin B into cos C. Just are opposite sin A, sin B, sin C. This is cos A, cos B, cos C. Here plus, this is a minus. Here 3 terms are plus, 1 term is minus. Here 1 term is plus, 3 terms are minus. Here double cos, single sin. Here double sin, single cos. Sin, the sin, sin, cos. Sin, sin, cos. Sin, sin, cos. Okay? To prove cos of A plus B is equal to cos A into cos B minus sin A into what? Sin B. Cos of A plus B is equal to cos A into cos B minus sin A into sin B. Okay? Let us take an unit circle. Unit circle means radius is 1.
Okay, this is a unit circle. X axis, this is the y axis, this is the origin. This length is 1, radius is, that is radius of the circle. Radius of the circle is 1 and center at origin, and center at origin. Center at kana origin. This is the center at origin. This length 1. So coordinate of this 1, 0. Okay, this is 0, 1. This is minus 1, 0, 0, minus 1. This is x dash, and this one y dash. Okay, this is unit circle. Next, suppose this is angle A. This is angle A. Okay, this is angle A. Next, this is angle B. So whole is angle A plus B. Whole one, A plus B. Whole angle A plus B. Okay, so this is the P point, this is the Q point. This is the P point, this is the Q point. Okay, draw PM perpendicular. PM perpendicular to x axis. Okay, suppose P having P ର coordinate x1, y1, this is x2, y2. जो draw करे थी, this is n. Okay, let P bracket x1, y1 and Q bracket x2, y2 be any 2 points, any 2 points on the circumference of the circle. Okay, circumference of the circle. Circumference of the circle. Circumference of the circle. Such that measure angle APM, measure angle और अच्छा circle. Draw PM perpendicular to x axis and QN perpendicular to x axis. Okay, let angle POM is equal to A and angle QOP is equal to B. Therefore angle QOM is equal to A plus B. Angle QOM is equal to A plus B. Okay, in triangle OPM, in triangle OPM, okay, OM by OP is equal to cos A. So implies OM is equal to cos A because OP is equal to 1. Length of OP is equal to 1, length of OQ also 1. OP is equal to OQ is equal to radius 1. So OM is equal to cos A. Similarly PM is equal to sin A. तो PM is equal to कौन आसियो कहलो OM is equal to cos A, PM is equal to कौन आसियो sin A. PM by OP is equal to sin A. ओके, तो
तो कोऑर्डिनेट ऑफ p मीन्स p ब्रैकेट रे x1, y1 मीन्स p ब्रैकेट रे cos a, sin a ହେଲା pm. ओके, p रो कोऑर्डिनेट. नेक्स्ट qn on बाई नेक्स्ट वन on बाई oq इन ट्रायंगल OQN on बाई OQ इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b, cos ऑफ a प्लस b. तो इम्प्लाइज on इज इक्वल टू cos a प्लस b, cos a plus b because mode of OQ is 1. Similarly qn is equal to sin a plus b, sin a plus b. qn what? on by op is equal to cos a plus b. This angle is a plus b, this angle. So on by OQ is equal to cos a plus b and qn by OQ is equal to sin a plus b. तो कोऑर्डिनेट ऑफ q, therefore q ब्रैकेट रे x2, y2 मीन्स q ब्रैकेट रे कौन आसबिटी cos a plus b, sin a plus b. तो कोऑर्डिनेट ऑफ q इज cos a plus b, sin a plus b. कोऑर्डिनेट ऑफ p इज cos a, sin a. and this is suppose r. This is r coordinate कौन 1, 0. r coordinate 1, 0. okay. next and join QR, okay. join QR, okay. next let PQRS, let S be a point on the circle such that measured angle ROS, such that angle ROS is equal to minus b. means जेहेतु clockwise sense, this is anti clockwise sense, this is plus, this is what, minus. okay. अच्छा, तो this is a plus b but sense is minus. okay. angle means this is ROS, magnitude means plus b but sense is minus, okay. sense is minus, okay. therefore angle POS is equal to angle POR plus angle ROS, okay. तो this is angle A plus of the whole angle is B. magnitude naba, the mode naba, this is plus, this also the mode naba, this is plus, A plus B. This angle also magnitude हिसाब रे, in magnitude this angle is A plus B, this angle, okay. this angle is A plus B, this also A plus B, okay. next one, join PS, join the chord
join the chord, this is QR, join the chord PS, join the chord एटा गोटे जॉइन कर लो, एटा गोटे जॉइन करियो कागु PS को, join the chord PS, ओके। अच्छा, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ S? कोऑर्डिनेट ऑफ S is कोऑर्डिनेट ऑफ, सपोज लेट S ब्रैकेट रे x3, y3, तो कोऑर्डिनेट ऑफ S वर्तन बाहर करिबा कोऑर्डिनेट ऑफ S, ओके। कोऑर्डिनेट ऑफ S मीन्स coordinate of S. तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ S इन दिस ट्रायंगल? देखो तो जॉइन करे ठीक परपेंडिकुलर जॉइन करेगा। कोऑर्डिनेट ऑफ S इज इन दिस ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ऑफ S इज इक्वल टू this is minus cos of minus b comma sine of minus b, okay। coordinate of S, coordinate of S is cos of minus b comma sine of minus b, okay। that is cos b comma minus sine b, कहीं cos of minus theta is equal to plus cos theta, sin of minus theta is equal to minus sin theta, तो cos of minus b is equal to plus cos b, sin of minus b is equal to minus sin b, okay। since angle QOR is equal to angle POS, angle POS is equal to means magnitude हिसाब से mode is equal to A plus B, therefore length of the chord QR is equal to length of the chord what? PS, length of the chord PS, okay। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला कौन? डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर मीन्स x2 माइनस 1 होल स्क्वायर QR, x2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज x3 y3 भावड़ा, दिस इज इक्वल टू x1 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 होल स्क्वायर, ओके, और रूट, और दिस इम्प्लाइज x2 मीन्स व्हाट? x2 मीन्स cos A plus B, दिस इज cos A plus B कॉमा sin A plus B, कार कोऑर्डिनेट Q रो कोऑर्डिनेट, P रो कोऑर्डिनेट cos A कॉमा sin A, ओके। तो ठीक अच्छी, तो x2 cos A plus B माइनस 1 रो स्क्वायर प्लस sin A plus B माइनस 0 रो स्क्वायर इज इक्वल टू x1 cos A माइनस cos B रो होल स्क्वायर, cos A माइनस cos B रो होल स्क्वायर प्लस sin A प्लस sin B रो होल स्क्वायर, रूट स्क्वायरिंग कर गला, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
ओके स्क्वायरिंग बोथ साइड तो स्क्वायर उठी गला x2 इज cos a plus b 1 इज देयर y2 इज sin a plus b x1 cos a x2 cos of minus b means plus cos b y1 sin a y3 minus sin b sin minus b means minus sin b okay so simplifying this so this is cos square a plus b plus 1 minus 2 cos a plus b and this is sin square a plus b is equal to cos square a plus cos square b minus 2 cos a into cos b plus sin square a plus sin square b sin square b plus 2 sin a into sin b okay sin of so sin square a plus b okay ठीक है तो this implies cos square a plus b plus sin square a plus b is 1 cos square a plus b plus sin square a plus b is equal to 1 this is also 1 minus 2 cos a plus b is equal to cos square a plus sin square a cos square a plus sin square a 1 cos square b plus sin square b 1 इट देख माइनस 2 कमन काट दियो माइनस 2 कमन काट देले कौन देख माइनस 2 कमन काट देले cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू कौन एटू कौन देख एटू माइनस 2 कमन काटा माइनस 2 कमन काटा प्लस हो गला दिस इज माइनस हो गला तो 1 এটা कैंसिल देख बोथ साइड 1 1 2 कैंसिल तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल माइनस माइनस आल्सो कैंसिल तो दिस implies तो 2 cos a plus b is equal to 2 into cos a into cos b minus sin a into sin b 2 to cancel therefore cos of a plus b is equal to cos a into cos b minus sin a into sin b okay this is the formula again देख टी ग्राफ टे भला करूची okay this is the x axis this is the y axis देखिए ये ग्राफ टा है ना थोड़े वाला चेक कर दियो ग्राफ टा देखो टिके देखो दिस इज यूनिट सर्कल तो ये लेंथ है 1 द रेडियस ऑफ दिस लेंथ इज 1 दिस इज 1 तो 1 कमा 0 दिस इज r निहाइज ओके अच्छा नेक्स्ट दिस इज p निहाइज p हला ये ड्रा कराई छि परपेंडिकुलर ओके ड्रा कराई कौन परपेंडिकुलर ए लेंथ रे कौन ए एंगल कौन नहीं ए तो ये एम तो ओ एम बाई ओ पी इज इक्वल कॉस अल्फा तो ए लेंथ रे 1 ओ पी लेंथ रे 1 तो आर पी रो कोऑर्डिनेट केते आसीबो कॉस ए अल्फा नहीं कॉस ए सिमिलरली पी एम बाई ओ पी ताला कॉस बी पी एम बाई ओ पी इज इक्वल कॉस पी एम बाई ओ पी इज इक्वल सॉरी पी एम बाई ओ पी इज इक्वल साइन ए पी एम बाई ओ पी इज इक्वल साइन ए तो पी एम इज इक्वल टू साइन ए बिकॉज ओ पी इज 1 ओ पी इज 1 तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज दिस ओके नेक्स्ट दिस इज क्यू ड्रॉ करो परपेंडिकुलर दिस इज एन ओ एन दिस इज बी
दिस इज बी एंगल तो ये होल एंगल है कौन आमर ए प्लस बी ओके तो ओ एन बाई ओ क्यू इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी तो क्यू रो कोऑर्डिनेट केते हबो कॉस ए प्लस बी कॉमा साइन ए प्लस बी बिकॉज ओ क्यू इज इक्वल टू 1 ये लेंथ रेडियसटा 1 निया ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन निहला ये गोटे एंगल निहला बी बी निहला ये भी एंगल बी दिस एंगल ऑल्सो बी जेहेतु मोर सेंसटा कौन अच्छी एंटी क्लॉकवाइज अच्छी तो दिस इज माइनस बी बट दिस एंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी मीन्स मैग्नीट्यूड हिसाब से दिस इज ए प्लस बी दिस मैग्नीट्यूड ए प्लस बी दिस ऑल्सो मैग्नीट्यूड ए प्लस बी ओके दिस इज ए प्लस बी दिस ऑल्सो ए प्लस बी मैग्नीट्यूड हिसाब से ओके तो दिस इज हमें जॉइन कर रखा ये जॉइन कर आम है एम एन पी क्यू आर एटा एस नेल टी नियो तो एस कोऑर्डिनेट देख एस कोऑर्डिनेट ऐसा नवा आम तो ओ टी दिस इज ओ टी बाई ओ एस इज इक्वल टू कॉस माइनस बी दिस इज कॉस माइनस बी कॉमा साइन माइनस बी दैट इज कॉस बी कॉमा माइनस साइन बी ये कोऑर्डिनेट ऑफ कार एस आसला नेक्स्ट कौन कराई क्यू आर को जॉइन कराई एंड पी एस को जॉइन कराई क्यू आर को देख क्यू आर को जॉइन कराई आ कौन पी एस को जॉइन कराई पी एस क्यू आर एंड कौन कराई पी एस जॉइन करा पी एस क्यू आर एंड पी एस को जॉइन कर क्यू आर एंड पी एस एटा है क्यू आर एंड पी एस सिंस दिस एंगल the magnitude of this angle is equal to magnitude of this angle therefore these two chords the length of these two chords are equal the length of these two chords are what equal तो आर डिस्टेंस फॉर्मूला पका हला आर भी डिस्टेंस फॉर्मूला पका हला तो डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन पी एस equal distance between QR the length of the chord QR is equal to the length of the chord PS length of the chord कौन PS तो सीटा देखिए आम कौन प्रूव करचे cos ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B ओके दिस इज द थ्योरी नेक्स्ट टू प्रूव sin ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B ओके नाउ sin of A plus B is equal to sin theta is equal to cos 90 minus theta. Sin theta is equal to cos 90 minus theta is equal to cos, this is pi by 2 minus A minus B. Pi by 2 minus A minus B, तो pi by 2 minus A minus B. तो cos of A minus B फार्मूला, तो यूज cos of A minus B. तो cos A इंटू कॉस बी प्लस माइनस लिखना चाहिए प्लस साइन ए इंटू साइन बी ओके कॉस 90 मान थीटा मीन्स कौन साइन थीटा इंटू कॉस बी कॉस 90 मान थीटा कौन साइन 90 मान थीटा कौन कॉस ए इंटू साइन बी ओके तो कॉस 90 मान से इक्वल साइन ए साइन 90 मान से इक्वल कॉस ए तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दिस इज साइन ऑफ A plus B okay also sin of A plus B plus C sin of A plus B plus C is equal to sin of A plus B suppose D plus C where D is equal to A plus B okay so E is equal to sin of D into cos of C plus cos of D into sin of C so sin of what is D means A plus B into cos C plus cos of D means A plus B into sin C तो is equal to sin A into cos B plus cos A into sin B whole into cos C this is cos of A plus B cos A into cos B minus sin A into sin B whole into sin C
तो इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कॉस इंडिविजुअली साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू कौन साइन सी. So this is the formula for sine of a plus b plus c. Okay. Next, some application of compound angle. Application of compound angle. Find the value of 1 sine 15 degree, 2 sine 75 degree, 3 cos 15 degree, 4 cos 75 degree, 5 tan 15 degree, 6 tan 75 degree. Okay. Okay. तो 1 साइन 15 डिग्री. तो साइन 15 डिग्री मीन्स साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. तो साइन यूज साइन ऑफ ए माइनस बी फार्मूला साइन ऑफ ए माइनस बी. तो साइन ऑफ ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी. तो इज इक्वल टू 1/√2 कॉस 30 √3/2 minus cos 45 1/√2 sin 30 1/2. This is √3 minus 1/2√2. तो sin 15 डिग्री is equal to √3 minus 1/2√2 is equal to cos 75 degree because sin 15 means 90 minus 75. तो sin 91 theta means cos theta. तो sin 15 is equal to cos 75 is equal to √3 minus 1/2√2. Second one sin 75 डिग्री. तो sin 75 मीन्स sin 45 प्लस 30 डिग्री. तो साइन ऑफ ए प्लस बी फार्मूला. तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. ओके. दिस इज 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2. दिस इज √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2. तो ये है मैंने कौन साइन 75 डिग्री. तो साइन 75 इज इक्वल टू कॉस 15 डिग्री. साइन 75 इज इक्वल टू कॉस 15 डिग्री. तो रिमेंबर दिस वैल्यूज. ओके. साइन 15 इज इक्वल टू कॉस 75 √3 minus 1/2√2. साइन 75 इज इक्वल टू कॉस 15 इक्वल टू √3 plus 1/2√2. ओके. साइन 15 इज लेस देन साइन 75 बट कॉस 75 is less than cos 15 means cos 15 greater than cos 75. Next tan 15 degree. Next tan 15 degree 3 this is 5 tan 15 degree. तो tan of 45 minus 30 is equal to tan 45 minus tan 30 divided by 1 plus tan 45 into tan 30. Use the formula tan of a plus a minus b. Tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b. So tan 45 is 1 minus tan 30 is 1/√3 divided by 1 plus 1 into 1/√3 is equal to √3 minus 1 divided by √3 plus 1. Now that is simplify करिबा √3 minus 1 into √3 minus 1 divided by √3 plus 1 into √3 minus 1. तो इज इक्वल टू दिस इज 3 plus 1 minus 2√3 डिवाइड बाई 3 minus 1. तो 4 minus 2√3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 minus √3. ओके. देयरफॉर tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 minus √3 इज इक्वल टू cot 75 डिग्री. सिमिलरली tan 75 इज इक्वल टू 2 plus √3 is equal to cot 15 degree. Okay. tan 75 is equal to cot 15 degree is equal to 2 plus √3. 2 plus √3. Okay. These are the some values 15, 75. Okay.
There are some questions. Proof cos A into sin B minus C plus sin cos B into sin C minus A plus cos C into sin A minus B is equal to 0. Next one, sin B minus C divided by sin B into sin C plus sin C minus A into sin C into sin A plus sin A minus B divided by sin A into sin B is equal to 0. And last one, tan square A minus tan square B is equal to sin A plus B into sin A minus B divided by cos square A into cos square B. Okay, so question number 1, LHS part. LHS cos A into sin of B minus C plus cos B into sin of C minus A plus cos C into sin of A minus B. So simply use the formula sin of A minus B. Use the formula sin of A minus B. So this is cos A. So this sin of B minus C means sin B into cos C minus cos B into sin C plus cos B into sin of A minus B formula. So sin C into cos A plus minus cos C into sin A plus cos C sin of A minus B sin A into cos B minus cos A into sin B. So multiply cos A individually. So cos A into sin B into cos C minus cos A into cos B into sin C. मल्टीप्लाई कर दियो cos A into cos B into sin C माइनस sin A into cos B into cos C प्लस sin A into cos B into cos C माइनस cos A into sin B into cos C. cos A sin B cos C, cos A sin B cos C, cos A sin B cos C. तो माइनस प्लस कैंसिल, cos A sin B cos C, cos A sin B cos C कैंसिल, माइनस cos A sin cos B sin C, cos A cos B sin C, द प्लस माइनस कैंसिल. नेक्स्ट sin A cos B cos C, sin A cos B cos C, ये भी कैंसिल. तो व्हाट इज 0? तो दिस इज RHS. दिस इज RHS. नेक्स्ट वन, सेकंड वन 2 LHS sin of B minus C divided by sin B into sin C plus sin of C minus A divided by sin C into sin A plus sin of A minus B divided by sin A into sin B. Okay. अच्छा, is equal to sin of B minus C formula, sin of B into cos C minus cos B into sin C divided by sin B into sin C. Sin B into sin C. Next, this also sin C into cos A minus cos C into sin A divided by sin C into sin A plus sin A into cos B minus cos A into sin B divided by sin A into sin B. ओके, तो ये सेपरेट कर दियो. तो दिस इज सेपरेट कर दियो, sin B into cos C by sin B into sin C minus cos B into sin C by sin B into sin C plus sin C into cos A by sin C into sin A minus cos C into sin A by sin C into sin A plus sin A into cos B by sin A into sin B minus cos A into sin B by sin A into sin B. ओके, ये देखो sin B को sin B कैंसिल, sin C को sin C कैंसिल,
sin c को sin c cancel, sin a को sin a, this is sin a cancel, this is sin b cancel. So this is equal to cos c by sin c means cot c, cot c. Cos b by sin b means cot b, plus cos a by sin a, cot a, minus cos c by sin c, cot c, plus cos b by sin b, cot b, minus cos a by sin a, cot a. चल देखो तो cot c minus cot c minus cot b plus cot b plus cot a minus cot a is equal to what? Is equal to 0. Is equal to 0. So is equal to RHS. RHS. Next, third one. Third one RHS. RHS का इजी हो गया sin of a plus b into sin a minus b divided by cos square a into cos square b. Okay, so use the formula sin of a plus b. Sin of a plus b means sin a into cos b plus cos a into sin b. Similarly, sin of a minus b, sin a into cos b minus cos a into sin b divided by cos square a into cos square b. A plus b into a minus b. A plus b into a minus b is equal to a square minus b square. So this is sin a into cos b whole square minus cos a into sin b whole square divided by cos square a cos square b. Separate कर दियो तो this is sin square a into cos square b by cos square a into cos square b minus cos square a into sin square b by cos square a into cos square b. तो cos square b को cos square b कैंसिल, cos square a को cos square a कैंसिल, sin square a by cos square a, sin square a by cos square a is tan square a. तो दिस इज tan square a minus sin square b by cos square b what? Tan square b. Tan square b is equal to LHS. Okay, is equal to LHS. Next question, question number 1. LHS tan 75 plus cot 75. Okay, so tan 75 plus cot 75. This is tan of 45 plus 30. This is also cot of और आपको 1 by कर दबा 1 by tan of 45 plus 30. Okay, this is tan 45 plus tan 30 divided by 1 minus tan 45 into tan 30. Cot theta equal 1 by tan theta. Plus this is 1 by tan 45 plus tan 30 by 1 minus tan 45 into tan 30. Okay, so tan 45 means 1. This is 1 by root 3 divided by 1 minus 1 into 1 by root 3. This is चल ऊपर को और 1 by 1 plus 1 by root 3 divided by 1 minus 1 by root 3. Okay, so is equal to, so this is root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1. Root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1. This also plus 1 by root 3 plus 1 by root 3 minus 1. So is equal to root 3 plus 1 by root 3 minus 1 plus root 3 minus 1 by root 3 plus 1. So this is root 3 plus 1 LCM बाहर चला, तो root 3 minus 1 square divided by root 3 minus 1 into root 3 plus 1. So a plus b whole square, a plus b whole square plus a minus b whole square, a plus b whole square plus a minus b whole square equal to 2 times a square plus b square divided by 3 minus 1. So is equal to 2 into 3 plus 1 divided by 2. 2 to cancel is equal to 4 is equal to RHS.
RHS. Okay, so a plus b whole square plus a minus b whole square equal to 2 times a square plus b square. The a minus b into a plus b equal to a square minus b square. Okay, so is equal to RHS. This is question number 1. Next, question number 2. Question number 2. 2 LHS is equal to tan 54 degree. So is equal to tan 54 means 45 plus 9 degree. 54 means 45 plus 9. So tan of a plus b formula. Tan 45 plus tan 9 degree divided by 1 minus tan 45 into tan 9 degree. Okay, so this is tan 45 means 1 plus tan 9 degree divided by 1 minus tan 9 degree, because tan 45 is 1. Okay, so this is equal to 1 plus tan 9 means this is sine 9 degree by cos 9 degree. This also 1 minus sine 9 degree by cos 9 degree. So find the LCM. So this is cos 9 degree plus sine 9 degree divided by this is cos 9 degree minus sine 9 degree is equal to RHS. Means LCM बाहर कर दियो, cos 9 टा cancel हो जाएगा. So find the LCM first, then cancel cos 9 degree. We get cos 9 degree plus sin 9 degree divided by cos 9 degree minus sin 9 degree. This is question number 2. Okay, again cos 54 is equal to cos 45 plus 9. So cos of a plus b formula. So use cos of a plus b. Tan 45 is 1. Next tan 9 degree means tan theta means sin theta by cos theta. Find LCM and simplifying we get cos 9 plus sin 9 divided by cos 9 minus sin 9 degree. Next question number 3. Next question number 3. 3 we have 45 degree is equal to either sum 35 degree plus 10 degree. So therefore tan of 45 is equal to tan of 35 degree plus 10 degree. So tan 45 means 1 is equal to tan of a plus b formula. Tan 35 plus tan degree divided by 1 minus tan 35 into tan degree. Okay, cross multiplication. So this is cross multiplication. 1 minus tan 35 into tan degree is equal to tan 35 plus tan degree. तो ये माइनस टर्म ने सेपरेट नहीं गले कौन आसी प्लस. तो इम्प्लाइज 1 is equal to tan 35 plus tan degree माइनस becomes कौन हम प्लस है टेकिंग दिस टर्म राइट. तो प्लस tan 35 into tan degree. Okay, so hence proof tan degree 10 plus tan 35 plus tan into tan 35 is equal to what? 1. Okay, this is the proof. Okay, next class we deal with multiple angle and sub multiple angle. Okay.